Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss what is a mixture actually. So let's begin with water. So are water and carbon dioxide gases are mixture? How can you show that? Gases, not mixtures. No. Why? If we take the example of water, it is made up of two kinds of atoms. Yes, you are right. Water is made up of oxygen and hydrogen atoms. But still, it is a pure substance. How? Water and carbon dioxide are examples of compounds. Compounds? Another set of substances. No, not quite. A compound is a pure substance that is composed of two or more elements, chemically combined in definite proportion by weight. Point the term definite proportions. In definite proportions, that is meant for purity, right? For example, water is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. These atoms combine to form a compound known as water. The smallest particle of water is called a molecule. A molecule is the smallest particle of a compound that still has all the properties of a compound. Water, ammonia, carbon dioxide, and limestone are examples of compounds. Is salt solution a compound? No, it is not. Even compounds have similar properties like that of elements. Compounds are composed of two or more elements which are chemically bound with one another in fixed proportions. Let's look at some of the characteristics of compounds. A pure chemical compound is homogeneous in nature, made up of the same type of molecules. For example, water contains only molecules of water. Water contains molecules of water only. That means HOH. H2O. What does it mean? H2O means one oxygen bonded with two hydrogen with a covalent bond, right? That is why it is called a compound. Is it? So properties of compound are what? Properties of compounds are basically compounds in nature, homogeneous in nature, for example, water, and A compound can be broken into its constituents. For example, water can be broken into constituent elements, hydrogen and oxygen. Suppose you want to break the compound. The compound has the property to split into its constituent particles. And what is the constituent of water? It's H2 plus O2. They give H2O, right? And when we split this H2O, again it will give H2 plus O2. Then you can balance the equation, right? By the process of electrolysis. That is electrolysis. A compound has a fixed composition. For example, see once again, H2O can be splitted into two constituent, H2 and O2. Which kind of process that? This is called electrolysis, with the help of electrolysis. That means if we give current to water, if we supply electricity to water, it will split into hydrogen gas and oxygen gas as well, right? Electro means in presence of current, lysis means breakdown. To break down in presence of current, that means current breaks water into hydrogen and oxygen, and hydrogen and oxygen are what? The constituent of water. A water molecule is always composed of two hydrogen atoms and one oxygen atom. A compound has a distinct set of properties which is not similar with the properties of its constituent elements. Yes, the very important point. When compound is formed, suppose I am taking the example water or I am taking the example of sodium chloride, ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, इसको आप बोलते हैं सॉल्ट, राइट? अब सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट एक कंपाउंड फॉर्म में है, लेकिन जब आप कहोगे इसके इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है, अगर Na अलग है, Cl अलग है, तो ये अभी तक मेटल था और अभी तक ये क्या था? ये नॉन मेटल था,
अलग था तो, लेकिन कंबाइन होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, NaCl, जो कि बन गया एक तरह का सॉल्ट। तो याद रखेंगे, अभी तक इसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल, इसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल, लेकिन कंबाइंड होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है, इसकी जरा भी प्रॉपर्टी पीछे वाले से मैच नहीं करता। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि कंपाउंड्स बनने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इज इट? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएंगे जैसे ही कोई चीज कंबाइंड स्टेट में आती है कंपाउंड्स में। For example, sodium chloride, table salt, is a harmless substance which is a white crystalline solid. On the other hand, its constituents, sodium, is a grayish-white solid, and chlorine is a greenish-yellow gas that are potentially dangerous. लेकिन कंबाइंड हो Sodium जाएंगे is तो a highly reactive metal which catches fire when exposed to air. सोडियम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, अगर वो एटमॉस्फेयर में आ जाए और हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए तो सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल कहा जाता है, बर्न हो जाएगा, हाईली इन्फ्लेमेबल है। वहीं अगर हम खाली क्लोरीन की अलग से बात करें, क्लोरीन इंडिविजुअल अकेला क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन अकेले गैस फॉर्म में होता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, बहुत ही चोकिंग स्मेल होती है इसकी, गला भी चोक कर सकता है, इवन बेहोश भी हो जाते हैं लोग, वी गेट फेंट एक्चुअली। सो इफ बट problem is that when they combined NaCl, right, they lose their individual property, खत्म, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज कर दे और क्या बना देते हैं, कंपाउंड। मिक्स होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड, जो कि इंडिविजुअली बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत हैजर्डस होते हैं, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद यानी मिक्स होने के बाद वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है। And chlorine is highly poisonous. From this we can say that compounds exhibit a distinct set of properties. A compound has a sharp melting and boiling point. Note it down. For example, water has a boiling point of 100 degrees centigrade And that is the exact point. and a melting point of 0 degrees centigrade. Hey, what about vegetable salad? I like it. It's so colorful. Is it a mixture? Yes, you're right. Observe carefully. The salad contains a variety of vegetables like carrot, cucumber, beetroot, tomato, cabbage, and onion. You can segregate each of the vegetables from one another, isn't it? Yes. Yes. So, vegetable salad is a mixture. A mixture is matter that consists of two or more substances which may be elements, compounds, or both mixed together physically in any proportion, but not chemically combined. For it, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। मिक्सचर में सपोज करो आपने कुछ ऐसा बनाया, मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता हूँ। सपोज करो मिक्सचर वो होता है जिससे आपने कहा A + B + C, तीन चीज़ों को मिलाया और तीन चीज़ें मिलने के बाद मिक्सचर, ध्यान देंगे, तीन चीज़ें मिलने के बाद मिक्स तो हो जाए, A बन गया, B बन गया, C बन गया, है ना। और जब मिक्सचर हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं, A को भी निकाल सकते हैं, B को भी अलग कर सकते हैं, C को भी अलग कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे जब हम कह रहे हैं कि ये हो रहा है A + B + C और ये बना देते हैं D, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, राइट। तो ये मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर ये है। मिक्सचर वो होते हैं जिनको हम किसी भी प्रोपोर्शन में कैसे भी करके मिला सकते हैं और उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को वापस निकाल सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो मिक्सचर कहलाते हैं। लेकिन जब कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पर वो अलग नहीं हो पाएंगे, एक बार बन गए तो बन गए। देखें आगे। example, air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. These gases are not chemically combined with one another and can be set. देखें, एयर आपका एटमॉस्फेयर भी एक तरह का मिक्सचर है। 21% ऑक्सीजन है, 78% पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बाकी इनर्ट गैसेस कितना है, 0.97%। याद रखेंगे वो सारी क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में N2 + O2 + CO2 + अदर गैसेस का मिक्सचर है और ये आपस में कंबाइंड नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर में गैसेस का मिक्सचर है, ना कि ऊपर कोई कंपाउंड फॉर्म में है। इज इट? Separated by suitable means. Based on the distribution of the particles in the mixture, there are two types of mixtures, heterogeneous and
heterogeneous and homogeneous mixture. In next video we are going to discuss hetero and homogeneous mixtures.